Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. Welcome back on my YouTube channel. This video is for third year BCom semester 6 economics. We'll start this video with the introduction part and the unit number 3. As you can see on the slide, the unit name is Monetary Policy of Reserve Bank of India. Uh, these things are very important as you can see on this slide. Few things which we get to understand because all the things will be repeated in the chapters in the next part. So first we should understand what the concept is, what are the jargons. So the first, before we start this video, I would request you please subscribe my channel and please like, share, comment. Okay, let us begin with this chapter. As you can see on this slide, on the first slide, there is an index. We would learn repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR, bank rate, margin requirement, moral suasion, and credit rationing. So basically, these are the terms which will be used again and again in the chapter. So let us start the video. If we talk about repo rate and reverse repo rate, so we would start this video with these two concepts. So basically, repo rate and reverse repo rate is kind of different. Like when we talk about repo rate, so repo rate is a rate when Reserve Bank of India, when Central Bank of India gives loan to any commercial bank. सो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई जो अपेक्स बैंक होती है किसी भी कंट्री की, सो एज वी नो अपेक्स बैंक इन इंडिया, दैट इज आरबीआई विच रेगुलेट्स ऑल द थिंग्स, right? RBI was incorporated in the year of 1935 and 1949 को it got nationalized bank. Our government, our central government gave all the authorities to Reserve Bank of India to maintain all the rates. So the first one is repo rate. So basically repo rate is a rate on which Reserve Bank of India give loan to commercial bank. ये वो रेट रहता है जहाँ पे जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को लोन देती है. And if we talk about reverse repo rate, so reverse repo rate is a totally different condition. Like जब कोई कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन देती है, उससे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आरबीआई गिव्स लोन टू एचडीएफसी, सो द रेट विच वुड बी चार्ज्ड, इट वुड बी कॉल्ड रेपो रेट. बट इफ इन सर्टेन कंडीशंस, if HDFC gives loan to Reserve Bank of India, that would be reverse repo rate. And always remember, reverse repo rate is always lesser than repo rate. So let us see the definition. Repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial bank or financial institution in India against government securities. Yes. As we, the citizen of country, as we go to take a loan from any bank, any commercial bank, we need to put something as a mortgage. So in the same way, commercial bank, they also have to put many things as a mortgage. Like they can put any precious metals like gold, silver. They can also put any kind of properties, or they can also put any kind of shares as well, shares of the bank. And second, reverse repo rate. Reverse repo rate is the rate at which the central bank of country, like Reserve Bank of India, borrows money from commercial banks within the country. So if there is a need, if RBI has a need of money, and if RBI asks money from any commercial bank, the rate would be applied, that will be called reverse repo rate. So as you can see in the slide, in the picture as well, so commercial bank, when commercial bank is giving loan to Reserve Bank, Central Bank, it is called reverse repo rate. And when Central Bank is giving loan to commercial bank, that is repo rate. Okay, let us move on second slide. Okay, so on the second slide, there are the two basic concepts which we need to understand, what is SLR and what is CRR. So before we start this slide, I would give you a short brief about this. So let us start with CRR. Now, how CRR works, what CRR is. So CRR is cash reserve ratio. When any commercial bank takes deposit from customers, like they can take deposit from any way. Like we have saving accounts in banks, we have current accounts in banks, we have FD in the bank. So these are the deposits for the any kind of commercial bank. Now what happens here, so if any bank gets 100 rupees of deposit from customers, so they are not allowed to give 100 rupees loan or 100% loan to any other customer. So what happens here, so why it is necessary. So basically एक simple example ले लेते हैं. जैसे कि
इफ आई एम अ बैंक, अगर मैं लोगों से डिपॉजिट लेता हूँ, इफ आई स्टार्ट कलेक्टिंग डिपॉजिट, सो देर आर द चांसेस द कस्टमर मे कम एंड आस्क मनी अगेन, राइट? So in that case, if bank has no money, what would happen? The reputation of banking system of India, or indirectly we can say Reserve Bank of India, go down. So Reserve Bank India has made some certain rules and regulation, like out of 100% of deposits, they can lend only certain percentage of amount to the customer as a loan, not 100%. So basically the range is vary, like it is from 3% to 15%, right? So it can vary कि वो 3% से 15% के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं. So as you can see in the slide, if customer is giving 1,000 rupees deposit to the bank, and the CRR rate is 4%, and that is actually current rate. So out of 1,000 rupees, 4% commercial bank has to keep as a reserve to Reserve Bank of India. So इन 1,000 रुपए में से 4% जो 40 रुपए होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज ए रिजर्व रखे जाएंगे, और बाकी के 960 रुपीज द कमर्शियल बैंक कैन गिव लोन टू एनी कस्टमर. सो बेसिकली यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर में ये डिफरेंस रहता है. सीआरआर इज कैश रिजर्व, मतलब वो जो रिजर्व्स रखे जाएंगे वो कैश के फॉर्म में होंगे, और जो एसएलआर रहता है, सो एसएलआर इज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. यहाँ पे जो रिजर्व्स रखे जाएंगे वो रिजर्व्स कैश फॉर्म में नहीं बट किसी अदर फॉर्म में रखे जाएंगे, लाइक एनी प्रीशियस मेटल, सिल्वर और गोल्ड रख दिया जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी रख दी जाए. सो इन दैट वे एसएलआर एंड सीआरआर वर्क्स. So let us read the meaning of SLR, statutory liquidity ratio. SLR is a minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in a form of liquidity, gold or other metals. So यहाँ पे SLR में हमें ये सिर्फ ध्यान देना है कि ये जो रिजर्व रहेगा दोनों में रिजर्व रखा जाएगा. लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर 4% CRR रखा जा रहा है एंड 4% SLR रखा जा रहा है, सो आउट ऑफ 100 रुपीज ओनली 92 रुपीज जो है वो कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करेगी, किसी कस्टमर को लोन दे पाएंगे. 4% CRR के और 4% SLR के उनको रिजर्व करने पड़ेंगे. SLR जो होता है वो कैश में नहीं होता है. SLR जो होता है वो कोई प्रेशियस मेटल रखे जाते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर हो गए या प्रॉपर्टीज हो गई. Okay, CRR is a percentage of bank's total deposit that it needs to be maintained in a liquid cash. CRR का एक सिंपल कंसेप्ट है, ये एक ऐसी अमाउंट है जो कैश में ही रखी जाती है. सो व्हेन देयर इज अ नीड टू गिव मनी टू एनी कस्टमर, सो दे कैन गेट बैक फ्रॉम द RBI एज वेल. तो उनके लिए बहुत एक तरीके की हम देख लें तो बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी बन जाती है. लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, in this slide we will learn bank rate and margin requirement. Now first let us talk about what is bank rate. So previously a few minutes ago we just completed repo rate. repo rate क्या था कि जब RBI जो है किसी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, that is repo rate, right? But bank rate क्या रहता है? bank rate is the same but the minor difference is जो repo rate रहता है that is for the short term, एंड बैंक रेट जो रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. एज आई कैन गिव यू फ्यू एग्जांपल, जैसे कि हम लोन लेते हैं बैंकों से, जैसे कि इफ यू आर टेकिंग लोन, होम लोन, राइट? सो देयर कुड बी द ड्यूरेशन लाइक 15 years, 20 years or 25 years. दैट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, राइट? इन द सेम वे, if commercial bank is taking loan from RBI, from central bank, and if it is for the long term, they would take on bank rate, not on repo rate. Repo rate is only for short term period and bank rate is for the long term period. Let us understand bank rate at which the Reserve Bank of India lends money to commercial bank or financial institution in India against the government securities, and it is for the long term lending. So ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा. एंड लेट अस टॉक अबाउट मार्जिन रिक्वायरमेंट. अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि suppose if you have like if you are going to bank for taking loan, right? If you need a loan of 10 lakh rupees and you need to put something as a mortgage, आपको कुछ ना कुछ क्या है गिरवी रखना पड़ेगा. So what happens at the like the amount is 10 lakh rupees. So इसके अगेंस्ट में आप 10 lakh rupees की प्रॉपर्टी जो है वो mortgage नहीं रख सकते because there is a margin requirement. You have to keep at least 12
to 15 lakh rupees property as a mortgage. So mortgage मतलब margin amount की अगर हम बात करें, I can give you one more example. Suppose if you are going to buy a house, right? So if margin requirement is 20%, so out of 20%, like what happens, 10 lakh rupees is the cost of house, so customer has to be a 2 lakh rupees and bank can give 8 lakh rupees a loan on the paper on the mortgage of house of 10 lakh rupees. So एक मार्जिन रखा जाता है, एक कस्टमर को एक अमाउंट जो है वो पे करनी रहती है, एंड जो बाकी की अमाउंट जो है वो बैंक पे करेगा. द सेम थिंग इट इज़ फॉर द कमर्शियल एंड आरबीआई एज वेल. जब कोई कमर्शियल बैंक जो होती है, जब आरबीआई से लोन लेने जाता है, तो जितने ही लोन लेते हैं उससे ज़्यादा की हमें क्या करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी मोर्टगेज रखनी पड़ती है फॉर द सेफर साइड ऑफ द बैंक. तो बैंक जो है एक अच्छी तरीके से उसको मेंटेन कर सके, बिकॉज द मेन एम फॉर द बैंक इज टू गेट मनी, टू अर्न द अमाउंट फ्रॉम यू, नॉट योर प्रॉपर्टीज. सो बेसिकली किसी की प्रॉपर्टी सीज करना, दैट वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर द बैंक्स एज वेल, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स करना, सीज करना, देर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. फिर उसके बाद ऑक्शंस करना, देर इज़ एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन. सो it may be a different thing. Okay, next we have moral suasion and credit rationing. Now what happens, in the next video I will show you that how Reserve Bank of India can control inflation. Now Reserve Bank of India inflation को कैसे control कर सकते हैं? So there is a very simple thing. I can give you a very simple example. इफ़ अ ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जो बॉडी में होता है वो कम होता है तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है, और ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लमेटिक होता है. इन द सेम वे, इफ द मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट इज हायर और लेजर, सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. या वो प्रॉब्लम कैसी होगी कि अगर सर्कुलेशन ऑफ मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, सो दैट कैन क्रिएट इन्फ्लेशन. द पीपल वुड स्टार्ट स्पेंडिंग अमाउंट ऑन अननेसेसरली थिंग जो रिक्वायर भी नहीं है उसके पीछे, एंड दैट वुड बी द स्कैरसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. सो स्कैरसिटी की वजह से क्या होगा, वो प्राइसेस बढ़ जाएंगे. एंड द वाइस वर्सा कंडीशन, इफ देर इज अ लेस सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट, व्हाट वुड हैपन हियर there would be the people would not buy anything. So यहाँ पे मार्केट में जो चीज़ें रहेंगी, there will be the supply higher and demand lesser. सप्लाई ज़्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगी, तो लोग जो क्या करेंगे, चीज़ें कम रेट पे बेचना शुरू कर देंगे, या तो there would be a competition, तो डिफ्लेशन हो जाएगा. So both conditions are not good for the market. तो हम moral suasion की बात करते हैं. So moral suasion is a condition where RBI gives direction to any commercial bank or all the commercial bank to become a very strict or to become very liberal by providing or to provide the loans. Like let me give you one example. जैसे कि if there is a higher circulation of money in the market, now what happens here, Reserve Bank of India doesn't want to give loan to anyone, right? Because there is already high circulation of money. So what happens here, Reserve Bank of India give a direct direction to the commercial banks that you have to be very strict. You just have to find the ways to reject the loans, right? And in the same condition, if there is a lesser circulation of money in the market, so RBI gives a direction to commercial banks that be liberal and start giving loans. They can also decrease the rate of CRR, SLR and margin requirements, so the people start getting loans from the market. So moral suasion is a request by the RBI to the commercial bank to take specific measure as per the economic trend. So that economic trend refers to inflation or deflation. For instance, RBI may direct bank not to give out certain loans. इसमें क्या होता है, RBI बैंकों को क्लियरली मना कर सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए जो है, एक शॉर्ट टर्म के लिए हम किसी भी इंसान को जो है वो कार लोन देना बंद कर सकते हैं या होम लोन देना बंद कर सकते हैं, राइट? सो बंद करना इन द सेंस दे कैन नॉट क्लोज बट दे कैन इंक्रीज द रेट्स. वो होम लोन जो है वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी. सो मैनी ऑफ द कस्टमर दे वुड नॉट प्रीफर टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स. May direct bank not to give out certain loans. It includes psychological means and informal means of selective credit control. Now, the second is credit rationing. So, how credit rationing works? So, moral suasion, when RBI gives direct
मतलब direct commands to the commercial banks not to give loan in any sector. But credit rationing, suppose if RBI gives guidelines to the commercial banks that you can only approve the loans of farmers, like if they are opening new industries, or they want a loan for agriculture, you can give them loan, right? Government also can increase, like government also can say that to commercial bank that you can give education loan on cheaper rate, and other loans will be would be expensive. So that is credit rationing. इसमें क्या हो गया सिंपली कि मोरल सुएशन में सारे सेक्टर्स के लिए लोन महंगी कर दी जाएगी या तो सस्ती कर दी जाएगी. इट मीन्स दे वुड बिकम वेरी स्ट्रिक्ट और दे वुड बिकम वेरी लिबरल. और क्रेडिट राशनिंग में क्या होगा, फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज, फॉर सर्टेन एरियाज, the banks would become strict, and for certain areas it would be liberal. That's very common. Okay, so we are done with the part 1. I would be uploading more and more videos about this. I need your support. Please like this video, share and comment as well. I would be uploading new videos in a few days, and I have created playlists for you. So if you want to check more videos for your standards, you can go in playlist and you can find easily the videos. All videos are there for you. And if you have any doubts, there is a link of my Instagram and YouTube, my YouTube description. So please ping me over there. I would be more